Hello friends, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. This is our second lecture regarding the parts of speech. So in this lecture we will be discussing about the pronoun, different kinds of pronoun, the cases of pronoun and the persons, and in the last we'll be discussing about the sequence of different pronouns in a sentence. Okay, what is a pronoun? Pronoun is a word which is used in the place of noun or indicates towards a noun. प्रोनाउन इसमें ज़मीर या ज़मायर जिसे उर्दू में हम कहते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जिसे हम नाउन की जगह, इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में, अपने जुमलों में, और इंडिकेट्स टुवर्ड्स अ नाउन। या तो ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की तरफ इंडिकेट करते हैं या इशारा देते हैं। What is the origin of a pronoun? Pronoun has originated from the word pronomen. Pro means in the place of and nomen means name. So in the place of name. So this word pronoun itself indicates that those words which are used in the place of noun. So there are almost 9 kinds of pronouns, which are personal pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, distributive pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, and in the last there is the reciprocal pronouns. So here are 3 cases of pronouns, among which the first is subjective case, objective case, possessive case. And in possessive case we have 2 situations. One is a possessive adjective and the other one is possessive pronoun. And the fourth one is a reflexive pronoun or reflexive case. And then we have 3 persons while using in pronoun, the first person, second person, and third person. And in the last, very important, and this is also important regarding the exam point of view, while sometimes we understand the whole topic of the pronoun, but we leave a mistake by making a particular sequence in using these pronouns. So starting with the first type of pronoun, that is personal pronoun. Personal pronouns are those that are used for persons, are called personal pronouns. And these persons are either the speaker, the addressee, or the person spoken about. देखें, पर्सन प्रोनाउंस ऐसे ज़मायर होते हैं, ऐसे इसमें ज़मायर होते हैं जो कि लोगों के बारे में बात करते हैं। अब वो कौन से लोग होते हैं? वो 3 टाइप्स के लोग होते हैं। या तो वो स्पीकर होगा जो बोलने वाला है, मुतकल्लिम जिसे कहते हैं, और द एड्रेसी टू whom you are speaking, okay, the audience. And the third type is the person spoken about, जो कि प्रेजेंट नहीं है लेकिन आप उनके बारे में बात करते हैं. So here we can say that the speaker is the first person, the address is the second person, and the person to whom you are spoken about is the third person. Okay, we have divided these pronouns, the person pronouns, as a subject pronoun or the object pronoun, and they can be separated or they can be distinguished by using their singular form and their plural form. Like for example, as in subject form we have in a singular I and its plural form is we, while you can be used for both forms, both for singular as well as in the plural form. While using he or she is the singular form of the subject pronoun and they is the plural form of the subject pronoun, and it can also be used in both way, either it is a singular or a plural. Well, if we use the pronoun as in the object form, so here we can see the singular me and the plural okay. Me is the singular form of the object pronoun and its plural form is us. You can also be used as a singular as well as for the plural, while using him or her is the singular form of object pronoun and its plural form is them, and it is always the same.
Like for example, if we see or if we use these pronouns in our writing, in our speaking, we can say that as an example. I've written a short paragraph, 2 or 3 sentences, that Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah is the founder of Pakistan. So here is the first sentence of this short paragraph. I have used the name of a person who is the founder of Pakistan, and this paragraph is written about this person. So if there comes any sort of or any kind of pronoun that will indicate about this person. Okay, so the next sentence, he joined Muslim League in 1913. So he indicates towards the name Qaid Azam. Then again, it is his contributions. It is the pronoun always over here, and again his indicates towards the subject or the main person of this paragraph. His contributions that made both the Britishers and Hindus to consider Muslim League a separate and a renowned political party in the subcontinent. तो ये एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखा है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो पर्सन प्रोनाउन है वो हम बार बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम बार बार लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई से द कायद आज़म इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म जॉइंड मुस्लिम लीग इन 1913, इट इज कायद आज़म्स contributions that made both Britishers and Hindus to consider Muslim League a separate and renowned political party in subcontinent. तो इस तरह जब जब एक शख्स का नाम बार बार यूज करते हैं तो उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी जो हाइनेस होती है किसी भी पैराग्राफ की या राइटिंग की, तो वो फिर खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसकी जगह पर उनके उनके प्रोनाउन यूज करते हैं। So to go ahead, we have the next type of pronoun, that is reflexive pronoun. So here we will also be teaching and studying the next type, which is emphatic pronoun. So इन दो pronouns को हम एक साथ लेके चलेंगे और समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसको हम किस तरह अपनी डेली लाइफ में, अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन को समझने के लिए मैंने कुछ नोट्स यहां पर लिखे हैं। आप देखिए जो सबसे पहले नोट है, इट इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन which says that the reflexive pronoun are used to indicate that the subject and object of a sentence are same. देखें जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, इसका मतलब ये है सेम तो नहीं होते लेकिन जो सब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करे ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता हो अपने सब्जेक्ट को, तो इस सिचुएशन में हम फिर इसे यूज कर सकते हैं एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल we have Asif was talking to himself. देखें Asif is the subject, himself is the reflexive pronoun. So Asif अपने साथ बोल रहा था, Asif अपने साथ बोल रहा था, it is the past continuous tense. Okay, so the next example, she hurts herself. वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती है या हर्ट करती है। ठीक है, इन द नेक्स्ट एग्जांपल, अनवारुल हक डिसीव्स हिमसेल्फ। अनवारुल हक अपने आप को धोखा दे रहा है। देखो उर्दू में अपने आप को, ठीक है, वो अपने आप से बोल रहा था, वो अपने आप को हर्ट करती है या वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मतलब सेम ही हो, देखें यहां पर आसिफ और हिमसेल्फ ये दोनों एक ही हैं, और यहां पर शी और हरसेल्फ एक ही हैं, और यहां पर अनवारुल हक एंड हिमसेल्फ एक ही है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक होना लाजमी है। अच्छा, सेकंड एम्फेटिक प्रोनाउन है। देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन को समझने के लिए आप इस नोट को देखें कि एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ले एम्फसाइज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। देखें जो सब्जेक्ट है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, वो अपनी बात को एम्फसाइज कर रहा है, वो अपनी बात पे थोड़ा सा जोर दे रहा है। अच्छा, शिद्दत नहीं दे रहा, थोड़ा सा जोर दे रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल, अंजला कुक्ड हरसेल्फ फॉर ऑल ऑफ अस। अंजला ने खुद ही, देखो उर्दू में इसकी पहचान है खुद ही,
इसकी पहचान है। अंजला ने खुद ही हमारे लिए खाना खाना पकाया, ठीक है। यासीन रोट द स्टोरी हिमसेल्फ, यासीन ने खुद ही स्टोरी या कहानी लिखी, खुद ही। तो इसकी पहचान एम्फसाइज उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि आपने खुद ही को यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि भाई the emphatic pronouns are those which emphasize on the subject of a sentence। अच्छा, जो थर्ड नोट हमारे पास आता है, देखिए एम्फसाइज हैं, सिर्फ जोर देना। अब थोड़ा सा एक डिग्री बढ़ा के हम फिर क्या करते हैं, अपनी बात में शिद्दत लेकर आते हैं। जब अब हम अपनी बात में शिद्दत लेकर आते हैं तो वी कैन से दैट वी स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, और द डोर ऑफ एन एक्शन, स्ट्रेस ऑन हिज स्पीच और ऑन हिज राइटिंग। अब इस सिचुएशन में आप ये देखें, थोड़ा सा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जो एम्फेटिक में है वो पहले जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद आपका एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। लेकिन जब आप अपनी बात में स्ट्रेस लेकर आते हैं, आप क्या करेंगे, सिर्फ जो एम्फेटिक प्रोनाउन है उसको आपने वर्ब से पहले लिखना है, ठीक है। आई माई सेल्फ ड्राइव द कार, आई माई सेल्फ ड्राइव द कार, मैंने खुद ही ड्राइव किया, ठीक है, कार को, ठीक है। अब दे themselves went to the school, I didn't take them, वो खुद ही स्कूल गए थे, मैंने उन्हें पिक नहीं किया या उन्हें नहीं लिया था, ठीक है। तो इसलिए देखें, चाहे खुद ही एक ही आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से जो बेसिक और माइन्यूट डिफरेंस ये है कि इस नोट में आपने अपनी बात को एम्फसाइज करना है, थोड़ा सा जोर करना है, ठीक है, जोर देना है अपनी बात के ऊपर, लेकिन अपनी बात में शिद्दत नहीं लेकर आनी। जब आप अपनी बात में शिद्दत लेकर आते हैं, देखें कोई आपकी बात नहीं मान रहा, ठीक है, कोई आपकी बात पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, तो इसलिए फिर उस हालत में आप अपनी बात में शिद्दत लेकर आते हैं कि भाई आई माई सेल्फ ड्राइव द कार, they themselves went to the school, I didn't take them, ठीक है। I think you might have understood inshallah. So the next we have the note D, which says without stress to show the willingness। देखिए बाज औकात हम अपनी बात में शिद्दत नहीं लेकर आए थे, लेकिन बाज औकात हम इसकी जगह अपनी विलिंग शो करते हैं। देखिए जब हम अपनी बात में शिद्दत नहीं लेकर आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारी बात में शिद्दत ना आ जाए लेकिन हम अपनी बात मुकम्मल कर पाएं, तो उस हालत में हम क्या करेंगे, हम अपनी विलिंगनेस है, जो अपनी ख्वाहिश है या अपनी मनमानी है, उसमें शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई काम हुआ है वो हमारी अपनी मर्जी से हुआ है, या कोई काम हुआ है उस बंदे ने या उस शख्स ने अपनी मर्जी से किया है, उसके ऊपर कोई शिद्दत नहीं डाला गया। फॉर एग्जाम्पल ही केम हिमसेल्फ, आई डिडंट कॉल हिम, वो खुद ही आया, आई डिडंट कॉल हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया। देखिए वो खुद ही आया, अब ये खुद ही उसकी विलिंगनेस शो कर रहा है, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बयान किया कि भाई आई डिडंट कॉल हिम, मैंने उसे जोर नहीं दिया या मैंने उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं डाला कि भाई वो हर हाल में मेरे पास आ जाए, बल्कि वो खुद ही मेरे पास आया है। He came himself, I didn't call him. In the same way, in the next sentence we have that she invited us herself, उसने खुद ही हमें दावत दी। We didn't insist, हमने इसरार नहीं किया, हमने उसके ऊपर इंसिस्ट नहीं किया for our invitation कि वो हर हाल में हमें दावत दें, उसने खुद ही हमें दावत दिया, हमने हमारी दावत के लिए उस पर इसरार नहीं किया। And the next and last of this reflexive or emphatic pronoun, that is, देखें अगर हम रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ बाय को लगा देते हैं तो इसका मतलब बन जाता है alone। देखिए बाय माई सेल्फ, बाय हिमसेल्फ, बाय देमसेल्फ, बाय हरसेल्फ, व्हाटसोएवर यू वांट टू यूज, आप यूज करते हैं अकेला, अकेली, अकेले, उर्दू में आप ये कह सकते हैं। ठीक है, कोई काम हुआ है अकेले, he has done the work alone। देखिए alone की जगह आप इसको एज अ फ्रेज के तौर पर यूज कर सकते हैं ताकि आपकी लैंग्वेज में खूबसूरती आ जाए। I drive to Karachi by myself, मैंने अकेले कराची तक ड्राइव किया, ठीक है, by myself। She is writing a novel by herself, वो अकेले ही नॉवल लिख रही है, जो अकेले उसका अपनी ही जो है चोटी यही आप ऐड करके मतलब अकेले ही आपने कोई काम किया है,
by herself, by him, by himself, or by themselves. So before starting the third type of the pronoun, I must mention one thing for you people, that you need to understand parts of speech from the very beginning, because it is the basis, it is the floor, it is the basic element of your English language. If you understand the parts of speech, then the coming lectures will be more easy for you guys. जब आप अपनी बिल्डिंग की, आप अपनी इमारत की जो जो साख्त है, बेसिक जो फ्रेमवर्क है, उसकी जो बेसमेंट है, अगर आप उसमें मेयार की क्वालिटी का सरिया यूज़ नहीं करेंगे, आयरन यूज़ नहीं करेंगे, सीमेंट यूज़ नहीं करेंगे, इसी तरह जो ब्रिक्स है उसको आप कंसोलिडेटेड वे में आप उसे पुट नहीं करेंगे अपनी अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर, तो तब आपकी जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा अर्थक्वेक की जो झटके हैं, जो उनकी वाइब्रेशन है, वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपकी लैंग्वेज की जो बेसिक है, आपके जो रूट्स हैं, वो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप समझेंगे, एंड आई हैव ब्रॉट दीज लेक्चर्स फॉर यू पीपल फ्रॉम मैनी रिसोर्सेज, आई हैव नॉट जस्ट रिटन और जस्ट read a single book. I have researched these lectures for you people from different books, from different websites, from all over the world. And inshallah, these lectures will bring you flying colors for you people, inshallah. So you need to know these lectures from the very beginning till the end, and next lecture as well. So I have written for you people a quote of a famous Pashto poet, and he has demonstrated, because we will now study the demonstrative pronoun. So as comparing to this topic, he has said, he is saying, and this is the quote of Khushal Baba. He is one of the renowned poet of Pashto language. He says, "का कोशिश का प इखलास ज़य ज़ामिनियम, का कोशिश का प इखलास ज़य ज़ामिनियम, का कामरान प ख़पल मुराद नशे सड़िया." He has demonstrated to the individual, to the one who struggles, the one who want to achieve something in his or her life. He has demonstrated to that particular person, if you struggle on the path for what you want to achieve, and if in the second sentence of this stanza, he says, if you not get succeeded, if not get the result for which you have struggled, I will be responsible for that. So of course it means, if you want to struggle and if you struggle for something, then ultimately the end result will be in your favor. Okay, now for starting our third type, which is the demonstrative pronoun. So demonstrative pronoun are used to point out the object to which we refer to. हम जिस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए बात करते हैं, ठीक है, वहां पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज योर्स, ये आपका है, ठीक है, इशारा करते हैं उस चीज के लिए. दैट इज टू स्मॉल फॉर यू, ये वो बहुत छोटा है फॉर यू. दैट इज टू स्मॉल फॉर यू. एंड दोज आर बेटर देन दीज, वो बेहतर है इनसे. इन इज अ प्लूरल. इसके लिए अगर हम यूज करें देन दिस, बट इन उर्दू वी यूज इन. वो बेहतर है आपके लिए, या वो बेहतर है इनसे. सो दिस इज द थर्ड टाइप. I hope you understand this. And the fourth type is the distributive pronoun. ये distributive pronoun करती हैं कि आप किन लोगों के बारे में बात करते हैं और कितने बंदों के बारे में बात करते हैं. लेकिन जो demonstrative pronouns हैं refers to persons or things one at a time. उसमें बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे अशिया हो सकते हैं, लेकिन उनमें से आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, उनमें से आपने एक ही चीज को इशारा करना है. लाइक फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज द एक्सपीरियंस. देखिए, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम करते हैं, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज रूल्स एज वेल, बिकॉज सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट जो रूल है, इसके अपने रूल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और the sake of your writing, देखिए, each refers to a single person, so that's why we have used a verb for this subject, because this verb is related to this each, which is a distributive pronoun. Each of these players, you know, these players, there are many players, more than two, or sorry, there are two, only two.
There are only two, but we are talking about only one person. We are concentrated to a one individual. So each of these players has the experience. इन दो में से each जहां पे भी आ जाता है, इसका मतलब है कि हम दो के बारे में बात करते हैं, नॉट मोर देन टू. इसी तरह either of them can drives the car. देखिए ये सिंगल है, ठीक है. इधर इन दो में से एक जो है, इधर ऑफ देम मतलब इनमें से कोई भी, या ये और ये भी, इनमें से कोई भी कार चला सकता है. एंड नीदर also indicates none of these two. Neither of these boys knows the Chinese language. इन दो बॉयज में से देखें, अगर ईच आ जाए या इधर आ जाए या नीदर आ जाए, और यहां पर प्लेयर्स हैं, अब आपको नहीं पता कि कितने प्लेयर्स हैं, एक हैं, दो हैं, या दो से ज्यादा हैं. इसी तरह ड्राइव्स देम, अब ये देम है, ये प्लेयर्स हो गया, यहां पर देम है विच इज मोर देन वन, एंड हियर आर बॉयज. ठीक है. तो अगर इस तरह की सिचुएशन में आपको पता करना है, आपको मालूम करना है कि कितने बंदे हैं, तो आपने इनके जो डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउंस हैं, आपने इनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें से कितने पर्सन है. तो अगर ईच आ जाए, हमें पता है कि इनमें से दो, ठीक है, मतलब ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज द एक्सपीरियंस. इन दो प्लेयर्स में से या इन दोनों को, ईच ऑफ दीज, इन दोनों को एक्सपीरियंस है, इन दोनों प्लेयर्स को एक्सपीरियंस है, ठीक है, खेलने का, बॉलिंग करने का, बैटिंग करने का, मतलब ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ गेम. ईदर ऑफ देम कैन ड्राइव द कार. ठीक है, मतलब इन दो में से हर एक को, इन दो में से हर एक को कार चलानी आती है. एंड थर्ड, नीदर ऑफ दीज बॉयज, मतलब इन दो में से एक को भी नहीं. ईदर ऑफ, नीदर ऑफ दीज इसका निगेटिव है, इधर का निगेटिव है नीदर. नीदर ऑफ दीज बॉयज नोज द चाइनीज लैंग्वेज. इन दो लड़कों में से या इन दो बॉयज में से एक को भी चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये पार्ट असल में कुछ बढ़ रहा है, इसकी टाइमिंग बढ़ रही है. इंशाल्लाह द नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग लेक्चर्स.